channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gaherwal. Today through the video I am going to introducing the general topic which is a value about the notification or the exam which I am going to present today, that is MP-SET exam. So first of all we need to know that what is MP-SET exam. MP-SET exam is the Madhya Pradesh or we can say state eligibility test. Like we used to have NET exam. NET exam is National Eligibility Test. Similar to that, it is a state level. Here we only have an examination around the people of state, and here all over the India. So it is a big difference. So when we have a difference between national and state, then we also have a difference between their weightage also. So in exam, MP-SET exam, we have two papers at the same day. That is, first 1 hour is reserved for the paper first, in which it has 100 marks, 50 questions and 2 marks each. So in this paper first exam, there was a different topic like research aptitude, ITC. ITC का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, इंटेलेक्चुअल कंप्यूटर, साथ में ही आपका कंप्रहेंसिव का टेस्ट होना और रीजनिंग, साथ में ही टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस एंड सोशल इकोनॉमिक्स. सो ऑल द that subject are included in paper first, which contribute for the teaching aptitude, for the research aptitude. So in paper second we are having a subjective based exam. It happened in the 3 hours, that is first hour for first paper 1 and second hour for paper second. So in this we have 200 marks weightage and 100 question, again 2 marks each. But in this exam there was a difference is that there is a no negative marking in this exam, where in national eligibility test we have a minus marking also. So this is the criteria. Now which subjects are used to be included in SET exam? So whatever the subject will have introduced in the national eligibility test, that is NET exam, the same exam subject we also have in the SET exam, like social science, mathematics, economics, arts, biology, life science, languages, computers and many more. Whatever we have in the UGC NET exam or CSIR NET exam, we have the same subject in SET exam also. Now what is the difference to have in state and SET? So by the name we can understand that a person who qualified the SET exam will be eligible to become an assistant professor or have a good placement in the government college. So it is the big difference. And also there is no need to have a PhD. It's basically a person who has completed his post graduation can directly apply for the SET exam, and if they luckily pass the exam, then they have the chance to get a assistant professor opportunity to continue as a job in future. So there is no need of a PhD, or there is no future to have a PhD admission. What we have a bonus in NET exam, but not in the SET exam. Now in paper second, like I have said already, that social science, mathematics, economics, arts, biology, life science, languages, arts, Hindi, whatever the subject you prefer to be in, they all have in the state level. But the difference is only that in that you have the national people around you and you have only the state people around you. Now why it's good to have a SET exam? Actually everyone have their own capability to have the exam, crack strategies or to crack the exam, but unfortunately some of the people also around us, they are not that much capable, and that's not a minus pointing, that everybody have their own capability to be what they can do in their future. So for that kind of prospectus and also to have a glorious future ahead, this kind of examination was proposed to held, and the government has organized this, and this exam happens once a year
every year, but sometimes due to some of their internal reasons the exam got postponed. Like the registration, if you see, the registration is completed in the duration of 21 March of 2024 and end on the 9th of May 2024. But the expected date over the exam schedule is for the 15th of December 2024. So it's a big gap, and in this gap you can very easily make the strategies to crack the exam and have the good opportunities to be luckily have the job in future. Now, what is the good thing about the MPSAT exam? The only one thing which I precisely think is that if I got the summary is that is only कि जैसे कि हम नेशनल एलिजिबल टेस्ट की बात करते हैं, नेट एग्जाम की बात करते हैं, वी हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, लाइक उसमें हम नेगेटिव मार्किंग देखते हैं, इसमें नहीं है. उसमें हमारा जो मार्क्स का होता है वो ज़्यादा होता है, इसमें उतने मार्क्स का नहीं होता है. इस 300 का है और वो शायद 400 या 600 से अराउंड होता है. यानी 300 के, सॉरी वो भी 200 का होता है यार, आई एम गॉट रॉन्ग, 200 का होता है. लेकिन इसमें बस डिफरेंस इतना है कि जो पेपर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है वो अलग से है, उसमें पेपर फर्स्ट अलग से नहीं होता है. उसमें हम देखते हैं सेक्शन ए बी सी. ए सेक्शन में आएगा आपका लॉजिकल, बी सेक्शन में आएगा 2 मार्क्स का, एंड सी सेक्शन में आएगा आपका 5 या 3 मार्क्स का. ऐसे करके उनकी वेटेजिंग होती है. तो ये थोड़ा सा उनका एग्जाम का पैटर्न अपना अलग है पेपर का. और इसमें हम पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड देखते हैं. पहली चीज, उसमें जो पेपर सेक्शन फर्स्ट है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेंसिव, आईटीसी, कंप्यूटर साइंस, इंटेलेक्चुअल राइट्स, इन सब के बारे में बात नहीं होती है. उसमें सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग की बात होती है, जो यहाँ भी है, यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस की बात होती है, वहाँ भी. लेकिन इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेंसिव, आईटीसी और कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें उसमें छोड़ दी जाती हैं, जो यहाँ पे पेपर फर्स्ट में हम देखते हैं. पेपर सेकेंड इज टोटली बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट यू चूज टू बी इन, जिसमें वहाँ पे सेक्शन बी और सी जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है जो आपका स्ट्रीम है. सो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस है. बट उसमें हम नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारे एज पर टू द न्यू गाइडलाइंस व्हाट दे प्रोवाइडेड अस, कि अब जो न्यू गाइडलाइंस है वो यही हैं, जो डिग्री एक कैटेगरी में पास हो रहे हैं उनका पीएचडी में एडमिशन भी अलॉट हो रहा है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अलॉट हो रहा है. लेकिन अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेते हैं तो उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, और जो अगर पीएचडी का ही एडमिशन लेते हैं तो उनको वो स्टाइपेंड मिलेंगे जो उनको गवर्नमेंट ऑथराइज करवा रही है. एंड अकॉर्डिंग टू द बी कैटेगरी, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर नहीं हुआ है, उनका सिर्फ पीएचडी हुआ है, तो उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी. स्टाइपेंड सिर्फ ए डिग्री वालों को मिलेगी, और सी डिग्री में जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं हुआ है तो उसको पीएचडी का दे दिया जाएगा. अगर वो किसी भी केस में नहीं होता है तो फिर आपको बस एक ये एश्योरेंस मिलता है एज पर न्यू गाइडलाइंस कि आपका पीएचडी में हो गया है, जो कि अभी आया है 24 जून से पहले, जस्ट one night before the exam was scheduled to be happen, but still there was no exam date is come. Now come to the point. So exam 15 of December को है and इसमें ही सारे streams हैं. So through this topic I want to share this information that people who don't know about the MPSAT exam notification, or they have missed the chance to have the registration, so keep in mind to do it again in the next year when they get a notification about the MPSAT exam. So this exam always enhance your experiences, always enhance your capabilities to do work more hard and do the things much better you can. So through this video I make sure to convey the information of about the MPSAT exam. I hope you liked the video, you understood the video as well. So if you are new to the channel, then please subscribe my channel and please like the video if you like my video. So stay tuned, meet you in the next video. So thank you so much.